सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। In previous video we have discussed about the important topic, that is the electrode potential. That is a very important topic because of by using this potential we can define a lot of reactions about the just different kinds of the metals and their displacement and just reactivity towards the acid. Now the time to first of all now the time to discuss about the how we can measure it. So remember one thing, this is the very important topic, measurement. This is the measurement of electrode potential. This is the measurement of electrode potential. If we want to measure the electrode potential, then it is not possible because of electrode potential कह रहा है किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है और सिंगल इलेक्ट्रोड का यूज करके हम पर्टिकुलर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए ऑलवेज जरूरी है कि वो एक कपल की फॉर्म में हो, सिंगल इलेक्ट्रोड ना हो। और नो डाउट ये कह चुका है कि वो कपल की फॉर्म में नहीं दे रहा है, तो उस पोजीशन में हम पर्टिकुलर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट जस्ट it is not possible, it is not possible to measure electrode potential of particular half cell, or you can say particular electrode, because that should in the form of पेयर की फॉर्म में होना जरूरी है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें साहब? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम S.H.E यूज करते हैं। सो for this it will use of a reference electrode with the non potential, एक नॉन पोटेंशियल वाला रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना चाहिए आपके पास में। और ये सारा काम कौन करता है? फॉर दिस इट विल यूज ऑफ S.H.E। S.H.E का यूज करते हैं बेटा, वेयर S.H.E मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि पर्टिकुलर इसका EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम E कहते हैं पर्टिकुलर, या E नॉट कह सकते हैं, E नॉट ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2, क्योंकि कल भी बात किया था रिडक्शन पोटेंशियल काम में लेते हैं, तो दैट इज द नोन एज अ 0.00 वोल्ट। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक्स एज बोथ मीन्स जस्ट यू कैन से कैथोड as well as एनोड, दोनों का काम करता है, कैथोड और एनोड का। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ S.H.E? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इफ यू गो विद द जस्ट S.H.E स्ट्रक्चर ऑफ द S.H.E स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देन डायग्रामेटिकली इट कंटेन्स वन ऑफ द बीकर लाइक दिस। कुछ इस टाइप से एक बीकर शेप में आपके पास कंटेनर होगा, यहां आपके पास में एक पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब होगी, कुछ इस टाइप से ग्लास ट्यूब, जिसे आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द ग्लास ट्यूब, यहां से एक वे खुला हुआ होगा और ये ग्लास ट्यूब कुछ इस प्रकार से होगी। पर्टिकुलर यहां पर ब्लैक प्लेटिनम से कॉटेड एक पीटी फॉइल ले लेते हैं, कुछ इस टाइप से coated with the black platinum, and
Here we use of a wire made up of just platinum. You can say this is the PT foil coated with black platinum and this is the PT wire. ये वायर कहीं मूवमेंट ना करे इसके लिए पर्टिकुलर इसको ग्लास ट्यूब से सील कर देते हैं एंड दिस वायर विल बी यूज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल. यहाँ 1 बार प्रेशर पे S2 गैस का फ्लो करते हैं S2 गैस और एंटायर एपरेटस सस्पेंड होगा आपके पास में 1 m HCl सॉल्यूशन में 1 m HCl solution and this is the structure of S.H.E standard hydrogen electrode. So we'll label it. This is the PT wire. This is the PT foil coated with black PT. And this was the structure of your just S.H.E. Now, if we'll go with this, then this is the glass tube also. Now, if it acts as if S.H.E acts as anode, then anode की तरह काम करेगा तो वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. So there will ऑक्सीडेशन प्रोसेस. एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सो H2 चेंजेस इन दैट केस H2 चेंजेस इन 2 of H plus just we can say 2 of electron. To represent this particular oxidation हो रहा है, loss of electron. This is the oxidation reaction. इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं पहले. यहाँ प्लेटिनम का आप यूज कर रहे हैं पीटी फॉइल का, पर्टिकुलर यहाँ H2 गैस आप फ्लो कर रहे हैं. ये रही H2 गैस जो कि 1 बार प्रेशर पे है. और बात करूं तो ये आ जाएगा आपके पास में वर्टिकल लाइन. H2 गैस यूज किया आपने, 1 बार प्रेशर यूज किया आपने. यहाँ ये H प्लस लिखेंगे हम, 2H प्लस कभी नहीं लिखते हैं. एंड here will use of concentration as a 1 m. ये रिप्रेजेंटेशन होगा इस SHE का जब ये एनोड की तरह काम कर रहा हो. सेकेंड टाइम एज आई टोल्ड यू ये दोनों का काम करता है. बोथ अगर आपके पास में गिवन अननोन हाफ सेल के ऊपर पर्टिकुलर कैथोड का काम कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये एनोड की तरह काम करेगा. और अगर गिवन अननोन सेल एनोड की तरह काम कर रहा है तो ये SHE कैथोड की तरह काम करेगा. अब कैथोड की तरह काम करेगा तो कैसे क्या रिएक्शन होगी. Now SHE, if SHE acts as cathode means here will reduction process होगा. This is the reduction process. So reaction will be inverse. This is the 2 of H plus with the gain of 2 electron changes in just S2 gas. So what is that? The cell representation will be inverse. Here is the H plus concentration 1 m changes in S2 gas with the 1 bar or 1 atm pressure. We are going to take just 1 bar. So this is the 1 bar pressure and this is the platinum electrode. This is the representation of SHE when it acts as a cathode. So this was about the SHE. Now how we can measure just electrode potential we'll discuss in the next slide. Read the entire matter properly because of it's too important. सो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सिंगल स्टेट पे नहीं कर सकते, कपल फॉर्म में होना चाहिए और उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं. दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड उसका आपके पास में इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी नोन होना चाहिए. दैट इज द 0.00 वोल्ट.
So now the time to discuss about the just measurement of electrode potential if unknown half cell acts as a anode. In that case, जब आपके पास में अननोन हाफ सेल एनोड की तरह काम करेगा तो SHE कैथोड की तरह काम करेगा. और गैलेनिक सेल का डायग्राम आप पढ़ चुके हैं. सो व्हाट विल बी, लेट्स सी. इफ unknown half cell acts as एनोड, अगर आपके पास में अननोन हाफ सेल एनोड का काम करता है तो उस पोजीशन में SHE कैथोड की तरह काम करेगा. सो द डायग्राम विल बी एज फॉलोज. Similar with the galvanic cell, it will be two container like this. Here is the just your unknown half cell. So this is the anode. This is the SHE like this. You can say this is the diagram of SHE. This is S.H.E. Here will flow of S2 gas, and externally they will attach by the voltmeter. Here is the wire having the just PT foil coated with the black platinum. Entire apparatus will be suspended in a 1 mm HCl. We have discussed. Here is the flow of S2 gas over the 1 bar pressure. This is the 1 bar pressure, and this is the electrode unknown half cell. Internally, externally तो अटैच कर दिया. इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा. So this is the internally it will be attached by a U-shaped tube. We know very well that is called as salt bridge, sealed with the agar-agar. Here will be salt. In that case, if here is the oxidation reaction, then M changes in because it acts as a anode. This is the anode unknown half cell, and this is the cathode as a SHE. In that case, M changes in M plus N of electron. While ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो यहाँ रिएक्शन रिडक्शन वाली होगी. 2 of H plus gains 2 electron, changes in S2. This is the just reaction. If we'll go with the just E naught of cell, in that case, if we'll go with the just E naught of cell, so how we can calculate? So this is the E cell. This is the EMF of the cell. You all know it is just equals to E naught of cathode minus E anode. You can say. This was about the diagram. See the diagram properly because of it's too important, as I told you, because without doing this you can't do. So this is the SHE standard. So we'll take just over here E naught of cell. This is the E naught of cathode and E naught of anode. Now this is the E naught of cell is given. Suppose then this is the E naught of cell. E naught of कैथोड के रूप में जो काम कर रहा है आपके पास में, that is the SHE. So could I write it H plus oblique H2 minus this is the E naught of anode. So its value is 0.00 minus E naught of anode, and this is the E naught of cell. उस पोजीशन में E naught of anode आपको फाइंड आउट करना है. तो ये E naught of anode को आप बाहर निकालेंगे, देन इट विल बी माइनस E naught of cell, यानी कि जो भी सेल का आपके पास में EMF है उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा. इसके लिए हम पर्टिकुलर यहाँ अज्यूम कर लें कि Zn वाला इलेक्ट्रोड काम में ले लें. Zn changes in Zn plus 2 with the loss of 2 electron. So now what will be, if we'll go with the just E naught of cell for whenever we are using just Zn, then the value will be 0.76 volt as the EMF of the cell.
So the representation regarding to the just your entire cell for this, if we are using just M, then it will be representation as follows. This is the M, changes in M plus N. Here will use of concentration. This is the salt bridge. This is your S.H.E, so H plus. Concentration is 1M. Changes in S2 over the 1 bar pressure. This is the 1 bar pressure, and here will use of platinum electrode. If we'll take just a Zn electrode as a zinc electrode as a anode, then what will be the representation of cell and the cell reaction? In that case, cell reaction will be your, this is your Zn, and it changes in Zn plus 2. This is the 2 of H plus reaction changes in Zn plus 2, and here will formation of the S2 gas. If we'll go with the representation, then this is the platinum electrode, just Zn electrode, changes in Zn plus 2. Concentration for this, it will be just 1M. हम पढ़ चुके हैं गैलेनिक सेल में, आप वहां जाके देखें ZnSO4 का कंसंट्रेशन आपने 1M ले रखा है. Here will use of salt bridge. This is the 2 of H plus, so 2 of H plus को हमको शो नहीं करना है, as I told you. Here will use of H plus only with the 1M concentration, and 1M concentration के बाद में आपके पास में it changes in S2 gas over the 1 bar, and this is the platinum electrode. This is the entire representation of the just galvanic cell whenever we are using unknown half cell as a Zn electrode. Now the time to discuss about the calculation of value. So E naught of cell is equals to, कैथोड की फॉर्म में S.H.E काम कर रहा है, ये रहा, then it will be E naught of H plus oblique S2 minus this is the E naught of Zn plus 2 oblique Zn. यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल काम मिलेगा आपको. So the value is your E naught of cell is your 0.76. This is the given. So this is your 0.76. Value of this is your 0.00 minus this is the E naught of Zn plus 2 oblique Zn. So E naught of Zn plus 2 oblique Zn means electrode potential will be your minus 0.76 volt. So this was about the calculation of electrode potential whenever we are going to take just as a unknown half cell in the form of anode. Go through properly regarding to this matter because it's too important. Now I would like to go with the just another, if unknown half cell acts as a cathode. If unknown half cell acts as a cathode, what will be? Let's see. This is the second part. If unknown half cell acts as कैथोड, आपको जो गिवन है वो कैथोड गिवन है, तो उस पोजीशन में डायग्राम इनवर्स होगा, उल्टा होगा, क्योंकि अब S.H.E आपके पास में काम करेगा एनोड का. So the diagram will be as follows. The diagram is as follows. This is the diagram. Here we'll take just a salt bridge internally sealed with the agar-agar like this, filled with the salt. Here will just your S.H.E
Now the diagram is your as follows. This is the S.H.E. For this flow of hydrogen will be opposite like this, and this is the diagram of S.H.E like this. Here is the flow of S2 gas over 1 bar. Here is the platinum foil coated with the black platinum, and here is the glass seal, and this is the voltmeter. Flow of electron will be as follows, and this is the unknown इलेक्ट्रोड जिसका आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, will be suspended in given electrolyte, and here it is suspended in, you can say, 1m HCl. This is the 1m HCl. Now S.H.E acts as anode, so it here will oxidation. This is the H2 changes in 2 of H plus with the loss of 2 electron, and while it acts as a just, this is the anode oxidation, and over the cathode as a positive terminal, here will reduction. So M plus N gains these electron and changes in your M. So what will be the cell representation? Cell representation will take just anode and cathode. So first of all it will be inverse PT. This is the H2 over the 1 bar. This is the salt bridge. Here M plus N. Here will use of concentration. This is changes in M. This is the entire representation of the entire cell, coupled cell. So now the time to discuss about the electrode potential. So E naught of cell is equals to, we can say, E naught of cathode minus E naught of एनोड. कैथोड और एनोड को आपको पर्टिकुलर गिवन है, कैथोड की फॉर्म में अननोन हाफ सेल है. सो दिस इज द ई नॉट ऑफ सेल, दिस इज द ई नॉट ऑफ एम प्लस एन ऑब्लिक एम माइनस ई नॉट ऑफ एच प्लस ऑब्लिक एच टू. द वैल्यू इज अगेन 0.00 वोल्ट, एंड दिस इज द ई नॉट ऑफ m plus n oblique m. So what will be the value of E naught of m plus n oblique m is equals to E naught of cell, यानी कि सेल के EMF की पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होगा. अब यहाँ पर्टिकुलर हम यूज में ले लें Cu plus 2 gains 2 electron and changes in Cu इलेक्ट्रोड काम में ले लें. So we can say if there is Cu electrode as cathode, so reaction will be inverse. Cu plus 2 gains 2 electron and changes in Cu. This is the reduction reaction. Along with the just it will be oxidation reaction. So here is the H2, just we can say it loses 2 electron and changes in 2 of H plus, loses 2 electron. This is the oxidation reaction. Net cell reaction will be from 2 electron to 2 electron remains cancelled. It will be Cu plus 2. This is the H2 changes in Cu and 2 of H plus. If we'll go with the just cell representation, so as an anode here will be use of platinum H2 1 bar. This is the 1 bar. Here is parallel line as a salt bridge. Cu plus 2 1m concentration, and this is the
1 bar pressure, and after then it will be use of, here will also H plus 1 bar. This changes in H plus over the 1 m concentration. Now salt bridge particular m plus n, just concentration आपके पास में गिवन होगी, और this is the vertical line, it changes in m like Cu. This is the representation. So S2 oblique, here will use of H plus with the 1 m concentration. Now this is the salt bridge. After salt bridge it will be Cu plus 2, concentration again 1 m, and this is the Cu. So this is the entire representation of the coupled cell. Now the time to discuss about the just EMF, standard EMF. So standard EMF E naught of cell is equals to E naught of cathode. As a cathode we are going to take just copper, so Cu plus 2 oblique Cu minus E naught of anode, just S2 oblique H plus. This was the just calculation. If we'll go with this, then its value is 0.00 volt. For this kind of the cell, just E naught of cell will be your 0.34 volt. So this will be your 0.34 volt, and this is the E naught of Cu plus 2 oblique Cu. This is the minus 0.00 volt for S.H.E. Now it will be E naught of Cu plus 2 oblique Cu is equals to plus 0.34 volt. This was the calculation of the electrode potential by using S.H.E as a if unknown half cell as a anode and if unknown half cell as a cathode. सो भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। आज हमने बात की पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है एसएचई का यूज करके, व्हाट इज द मीन ऑफ एसएचई। इसी विश्वास के साथ कि आपका साथ हमेशा से मुझे मिलता रहेगा, अदरवाइज इतना जल्दी आपके बिना साथ के ग्रो करना पॉसिबल नहीं था। यूं ही बने रहिए साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि हर एक टॉपिक हम कंसल्ट करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।